शुभमन, आपको पंत को और जायसवाल को न्यू पीढ़ी के बल्लेबाज के तौर पे देखा जा रहा है। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में अपने अपने दौरे पे कामयाबी मिली है। कितना बड़ा चैलेंज है, हवा नहीं रहता है। पुराने जनरेशन के प्लेयर्स जब आते थे पहले टूर पे बड़ा हवा रहता है, और इस सीरीज़ में, खासकर इस सीरीज़ में आपको लोग को लगता है इस यंग जनरेशन में ज़्यादा दबाव तो है होगा डिलीवर करने में? सर हुआ आई थिंक पिछली 4 जो सीरीज़ हम खेले हम जीते हैं, तो फिर हुआ मुझे लगता नहीं किस बात का होना चाहिए। हम हुआ उस चीज़ का होता है, पहले अगर हम आए हैं हारे हैं तो फिर रहता है कि यार यहाँ पे हम जीते नहीं हैं। बट जितनी भी बार हम इधर आए हैं, पिछली 2 बार जीते हैं, इंडिया में भी जीते हैं, तो आई थिंक उतना उस चीज़ का भी वो जो कहते हैं कि अगर बॉलर है तो बॉल देखनी चाहिए, वो चीज़ इस जनरेशन में ज़्यादा है कि उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉल कौन डाल रहा है। आप लोग के आपस में क्या बातचीत होती है? जैसे आज भी देख रहे थे आप लोग के साथ, पंत के साथ, स्पेशली यहाँ के बैटिंग कंडीशंस को लेकर। बातचीत सर नॉर्मली रहती है हमारी। कोई ऐसे बैटिंग को लेकर कभी कभी अगर बैटिंग कर रहे हैं तो कि बैटिंग को लेकर बात करते हैं कि ओवर डिफेंसिव तो नहीं हो रहे या ओवर अटैकिंग तो नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बात करते रहते हैं। थैंक यू। शुभन, हाँ जी, ऐसा ही लग रहा है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा था मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आई थिंक जैसे फर्स्ट इनिंग में जो जैसा मैंने बोला मेरे साथ हुआ कि जो दूसरे एंड पे चीज़ें हुई उसकी वजह से मैं थोड़ा अपने शेल में चला गया और मैंने सीधी बॉल मिस कर दी। और सेकंड इनिंग में थोड़ी सबको डिफ़िकल्टी आ रही थी, थोड़ा बॉल देखने में, बॉल की सीम पोजीशन देखने में। जनरली एज अ बैट्समैन आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं जब आपको बॉल का हाथ दिखता है, आपको उसकी सीम दिखती है, उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हैं कि बॉल किस तरफ जा सकता है। अगर वो आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरफ बॉल जा सकता है तो आप उसके लिए रेडी नहीं रहते हो। तो आई थिंक जो दूसरी इनिंग में जिस तरीके से मैं आउट हुआ, मुझे उनके हाथ से बॉल नहीं दिख रही थी विद द लाइट और पिंक बॉल की वजह से। बट जितना भी टाइम मैंने क्रीज पे बिताया मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बैटिंग करते हुए, और काफ़ी मज़े कर रहा था मैं क्रीज पे। बहुत अच्छा है टीम का। हमारा कल ही टीम डिनर था, बहुत वहाँ पे हमने फ़न किया टीम डिनर में। और आई थिंक जब ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिलेड वाला टेस्ट मैच हमारा अच्छा नहीं गया, बट स्टिल द सीरीज़ इज़ 1-1। इट्स यहाँ से 3 मैच की सीरीज़ है हमारे लिए, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 3 मैच की सीरीज़ है। और अगर ये वाला मैच हम जीतते हैं फिर मेलबर्न और सिडनी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अपर एंड रहेगा। बॉल पे सफलता आई थिंक टेल एंडर को छोड़ के मुझे लगता है कि एक ही बैट्समैन आउट हुआ है शॉर्ट बॉल पे, तो मुझे पता नहीं कौन सी सफलता की वो बात कर रहे हैं। ये तो आई थिंक कल ही पता लग गया आपको। थैंक यू। Just wanna wish them congratulations from the entire the Indian cricket team to become a world champion, to become the youngest world champion is a great treat. When I came here, the whole team was coming, and just walking to the stadium again after 2021 when felt very nostalgic. And the wicket I think we'll get to know once we play on it. It looks a good wicket, to be honest. Which the games are played here, especially test matches, is one of the most difficult things. To be able to maintain that intensity throughout the course of 5 days is what makes Australia touring so difficult. And I think more than anything it's the mental intensity and the mental fitness that is required here in Australia especially. The conditions are definitely challenging, but I think there's a period in between, I think from 30-35 overs till the second new ball where it gets a bit easier to bat, but just that mental intensity, are you there? Because obviously the pitches are fast, and the history of Australia, they've played with fast bowlers because the wickets have been hard, bounce, fast, so you have to be right there on the mental fitness and be ready and play with the same intensity at which you came at the crease in the start. Completely different from the red ball. It's a little bit harder to be able to gauge the seam and the hand of a bowler, especially when you're playing at night. And we are a bit more used to while playing with the red ball in the day. Just the dynamics of a pink ball test, we don't play as much, and just playing at night, it's a little bit harder to gauge the seam position and the hand position at which the ball is released. So it's a bit more difficult to look as a batsman. The beauty of playing a long series and playing a test series, there might be a scenario where a bowler might be getting you out 3 or 4 times in the series, and to be able to play the same bowler again in the next test match,
certain areas where you are a little vulnerable or where you can get out as a batsman. But I think that's the fun about playing a long series, playing a long test series. So do you think You know, you have played against them enough. Their test side, I think, for the past 5-6 years haven't changed much apart from one or couple of changes here and there because of injury or some niggles. But we have played. They also know what are the areas that we are going to target at them, and we also know what are the areas that we are going to target at them. So I think even before coming here, there was the both teams knew what would be the challenges coming here, and like I said, that's the fun part about being able to play a good long series, because there is more than the skill. There is a lot more mental tactics involved here. I think I still have freedom, as a batsman. When you are out there, one of the challenges is can you play the game how you want to play the game, irrespective of what's happening on the other end or what's happening on the scorecard. And I think I faltered in the first innings around because of that, because what happened on the other end, I kind of took that on me, and there was a period where I didn't get to face. Maybe I faced one ball in like 4 overs, and then the next ball that I faced, I kind of missed a straight ball, a fuller ball. But these are the challenges that you face while playing a test match. You might not get the strike for 3 or 4 overs. You might get the strike less, or you might face like 18 balls on the trot. As a team, as a batting group, we are looking to post a big total first up. This has been one of the key discussions, and depending on every batsman, I think is gonna have its own game plan, and they're gonna as a team, as a batting group, especially collectively, we're not gonna try to get a big first inning score. That's what the discussion was about. Shubman would normally get that. नहीं, उनको खुद गेंदबाजी करके स्पेशली ऐसी विकेटों पे बहुत मज़ा आता है, और वो हमको छेड़ते भी रहते हैं कि मैं अपनी जवानी में ऐसे कर देता तो फिर जब हम खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि अब विकेट अच्छे हैं बॉल डालने के लिए, कि थोड़ा हमको बॉल डालो, दिखाओ कि कैसे डालते हैं. शुभमन, आप दोनों मैचेस में दोनों पारी